Wanna do BCom from Delhi University? Then you must score high in the CUET UG 2023 exam. And for that, you must watch this full video as CUET 2022 topper Ayushmaan Bhatra will share some brilliant tips which, if followed, can help you grab a BCom seat from Delhi University. CUET is a very special kind of examination wherein if you belong to a science stream, let's say, it's not very difficult for you to switch to commerce stream, or if you belong to humanities stream, it's not very difficult for you to switch to commerce stream or any other stream. Basically, cross exchange of streams is very easy with that, because what is required in CUET is that you just need to give 3 domains and 1 language. That language can be anything from your local language to anything. There's a list of 26 languages or something like that given. Most people tend to go for English, so you have English, and then you tend to go for 3 domains, of which that can be anything. It could be physics, chemistry, maths. It could be, let's say, but there's one category or one important requirement for BCom honors per se. For BCom honors, one of those domains, one of the 3 domains mentioned, should either be accounts or mathematics. So if you belong to maths or humanities stream, you could just have if you belong to science or humanities stream, you could just have maths as one of your domain, and the other 2 could be physics, chemistry, or let's say political science, sociology, psychology, or history, or anything like that. So you'd still qualify for BCom honors. So it's not like you need to study commerce subjects. And obviously it's the very same for those who have already studied commerce. You can just go for accountancy, economics, business studies, or even mathematics for that matter. So what would happen is, if you give multiple domains, the best 3 ones would be qualified for will be selected among the ones that you have given. So the best 3 will be taken along with your language, preferably which is English. So these would total up to the score of out of 800. I'm giving you an example from my situation. If there are any changes, kindly let me know. But as for the 2022 pattern, the score was out of 800. So out of 800, you would firstly be giving your exam in a particular slot. In that slot, your percentile would be calculated based on how you have performed in comparison to other students. So you'd be given a percentile. For example, 100 percentile means that you've topped your shift. That means nobody scored more than you. You scored full marks, or even if you scored less marks, let's say 194 or 195 out of 200, still if you're getting 100 percentile, that means that nobody scored more than 195. You were the highest in that one. So you are assigned a percentile, and based on that, both size shift with it, right? You could have 10 to 15 shifts or even 30 shifts. So everyone having that same percentile, let's say 99.7 percentile in that particular subject, सबके जो भी marks होंगे, that would be averaged out, and you'll be giving that mark. So that would be called normalized marks. So your normalized marks add up होंगे, and Delhi University में you don't even need to enter your marks. Just to enter your credentials in the CSAS portal, and they'll automatically figure out what marks you had scored. You'll obviously be given a report card beforehand from NTA. You'll be allowed to challenge some questions if you feel that they have been unfairly or wrongly judged. Post that, a final report card will be there, and that would be communicated to all the universities, not just Delhi University, and they'll just use their system to extract all the data by itself. You need not put the marks. So that is what would happen. So in this, the most important thing for you to look at is ये जो percentile system है, इसमें it's बहुत ज़्यादा luck factor हो जाता है that if you have all the toppers in your shift, तो you could at the end suffer, right? कि अगर सबके ज़्यादा आ रहा है, तुम्हारा थोड़ा भी कम हो रहा है, percentile ज़्यादा गिरेगा. And if there's a shift, obviously इसमें probability रहता है. They try to make sure that सब में ऐसे ही है, but you cannot judge ना कि okay सब toppers को equally divide करेंगे एक particular उसमें. You can't do that. So उसमें एक element of luck रहता है. What you can rather do is that try to score 100 percentile in as many subjects as you can, because that would ensure security. 100 percentile मिल गया, that means उसमें सबसे ज़्यादा आ चुके हैं. And subjects like BST, economics, English, उसमें 100 percentile would definitely entail 200 out of 200. So जैसे cut off, if I were to tell, जैसे हम लोग का SRCC में BCom honors के लिए cut off रहा था 780 कह रहा हूँ. So if you have to score 780, so it would essentially mean that you can make around 3 mistakes. But since normalization है, if you make even just 1 mistake, it could lead to deduction of 10 marks. तो मान के चलो for the safe hand that 1 से 2 mistake कर सकते हो max to max. So अगर इतना ही कर सकते हो, so you should try to score 100 percentile in at least 3 subjects, right? And that could be business studies, economics, English, stuff like that. Because accounts and maths में तो obviously there's a lot of scope for making mistakes, right? जैसे मैंने maths, I used to practice maths 4 hours every day, and उसके पहले भी had a very strong grasp for maths. उसके बाद भी जाके I was able to score, and maths का पेपर इतना टफ था that despite scoring 100 percentile, you were awarded 196 marks, not 200. क्योंकि मैंने तो शायद 200 लाया था, but बाकी शिफ्ट में क्या रहा था, मतलब मैं 200 बता रहा हूँ, seeing my response sheet and everything, but वो change होता रहता है.
बट बाकी लोगों का ऐसा हो गया होगा कि दे स्कोर्ड 194 एंड किसी का 200, सो एवरेज आउट करके 196 बना. सो ये चीज है. मैथ्स वाज अ वेरी डिफिकल्ट वन. अकाउंट्स में भी यू कैन मेक वन और टू मिस्टेक, राइट? सो उसके लिए यू कैन कीप दैट स्कोप एंड यू कुड ट्राई टू स्कोर 100% इन अदर सब्जेक्ट्स. ये है. आई एम नॉट जस्ट स्पीकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉमर्स. सेम गोज फॉर सब्जेक्ट्स लाइक केमिस्ट्री. उसमें यू कैन स्कोर 100% एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है, राइट? इवन इफ यू कंसिडर क्या नाम इसका humanities, economics obviously is there, history, socio political science, all of those subjects can have like potential to score 100%, right? So you could do that. That is basically about the pattern in syllabus. Syllabus is mostly restricted around NCERT. Just थोड़ा deleted part है. I'd recommend you go through that, but उसको extensive study मत करो. Just solve mock papers and उसमें जब deleted part है, you could just go through that. And बस एक चीज है, those who are studying accountancy, they could just go through NPO. That is one important part. बाकी you can just leave the deleted part. Just go through that through mocks. मैथ्स में बिकॉज सेंट स्टीफेंस का इको ऑनर्स के लिए यानी इको ऑनर्स इन जनरल के लिए द क्राइटेरिया इज दैट यू नीड टू हैव मैथमेटिक्स, 2 more domains and इंग्लिश. तो उसमें मैथ्स कंपलसरी है. बीकॉम ऑनर्स में आइदर मैथ्स और इंग्लिश. तो उसमें आई कुड टेक मैथ्स अगर मैं मैथ्स पे फोकस करूं. देन यू हैव शहीद सुखदेव के लिए बीएफआई एंड बीएमएस. उसमें यू हैव मैथ्स प्लस जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश. सो जनरल टेस्ट का मैंने पढ़ लिया था. सो आई डिड ऑल ऑफ दैट. रिजल्ट ये आया कि इंग्लिश में बिजनेस स्टडीज, मैथ्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक्स में ये 5 सब्जेक्ट में मेरा 100% आया. अकाउंट्स एंड जनरल टेस्ट में 99 पॉइंट समथिंग रह गया. अकाउंट्स में एक मिस्टेक हो गया था एंड जनरल टेस्ट में आई थिंक मेरे को अप्लाई करना चाहिए था. एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन था दैट वाज रिपीटेड ट्वाइस, बट या आई गिव ऑल ऑफ दोस सब्जेक्ट्स. सो उसमें व्हाट आई रियलाइज्ड इज दैट जनरल टेस्ट के लिए यू नीड टू हैव अ स्ट्रेटजी बेस्ड अराउंड मॉक्स. मॉक्स तुम दोगे, ओके, यू विल सॉल्व अ वाइड वैरायटी ऑफ मॉक्स. देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, मॉक्स अवेलेबल ऑनलाइन. यू कुड सॉल्व दैट. एक टेस्ट सीरीज वगैरह ले लो, बैठ के एग्जैक्ट एग्जाम लाइक सिचुएशन में बैठ के मॉक्स दो. उस पे जो वीकनेस पता चले ना, डायरेक्टली डोंट गो एंड लाइक बैठ के सारा कोर्स कर रहे हो, बिकॉज उससे तुम्हें माइंड में कुछ नहीं जाने वाला. वो एक्टिव स्टडी नहीं है. यू विल जस्ट बी कंज्यूमिंग कंटेंट एंड वो फिर कुछ काम नहीं आने वाला. रादर व्हाट यू कैन डू इज हैव अ प्रोएक्टिव अप्रोच. जस्ट कंसिस्टेंटली गिव मॉक्स. मॉक्स में जो वीक एरिया पता चल रहा है ना, मान लो तुम्हारा डायरेक्शन सेंस वीक है, so either then you have a course and then you can look up direction sense and you could study that lecture, or you could just simply go on YouTube if you're not having a course. That direction sense का video दिखा दो. And general test का beauty ये है that you are not restricted to just one particular क्या नाम इसका CUET जनरल टेस्ट ऐसे करके वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है. कोई गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह भी है तो भी उसका जनरल टेस्ट लाइक जो एप्टीट्यूड पार्ट है तो सेम ही रहेगा. सो यू कुड रेफर टू दैट एज वेल, जहाँ पे भी तुमको सिंपल एंड समझ में आए. मेन वो चीज है. सो इसमें जनरल टेस्ट में एजुकेटर बाउंड्री इज लाइक लिमिटलेस. यू कुड जस्ट गो फॉर एनी एजुकेटर जिससे तुमको समझ में आ जाए. एंड बस उसी टॉपिक्स का वीडियोस देखना जो कि तुमको वीक लग रहा है. तुम्हारा स्ट्रेंथ पे जस्ट मॉक्स देते हुए वर्क करते रहो. बट अगर तुम स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स भी देखते रहोगे तो तुम्हारा पूरा टाइम लग जाएगा जनरल टेस्ट में, वो पॉइंट नहीं रहेगा. एज फॉर जीके वाला जो सेक्शन है उसमें ये मैंने क्वांट्स और एलआर का बता दिया. जीके वाला जो सेक्शन है जनरल टेस्ट के लिए, जस्ट यूट्यूब पे सर्च करो. मंथ वाइज वीडियोस रहते हैं, राइट? हर महीने का एक वीडियो, मतलब करंट अफेयर्स का रैप अप. सो यू कुड वॉच दैट फॉर 12 मंथ्स. उसके लिए भी मैं एक डिवीजन बताऊंगा. जैसे एक मान लो अभी जो पास्ट 6 मंथ्स है उसको ए मान लो, उसके पहले वाले 6 मंथ्स को बी मान लो. सो बी का डू नॉट मेक नोट्स, जस्ट गो थ्रू देम, क्योंकि वो तुम्हारा सीयूटी में उतना ज्यादा नहीं आएगा. लेटेस्ट 6 मंथ्स का आता है, बट वो 6 मंथ्स वुड गिव यू एन आइडिया कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है. अदरवाइज तुम अचानक से स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स तो तुमको कुछ पर्सपेक्टिव नहीं रहेगा. सो पहले का 6 महीने का देखो, डोंट मेक नोट्स, जस्ट गो थ्रू देम, बिंज वॉच कर लो जैसे नेटफ्लिक्स देखते हो. बाद में फिर जब ए वाला पार्ट करोगे उसमें थोड़ा बहुत नोट्स बना लेना एंड एग्जाम के लिए जस्ट गो थ्रू देम, हो जाएगा. इतना भी कर लोगे मोर देन इनफ. बिकॉज तुम बचपन में भी बहुत सारा जीके वगैरह पढ़ा है तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही सॉर्ट हो जाती है. करंट अफेयर्स में यू जस्ट नीड टू नो व्हाट्स हैपनिंग. अगर किसी को यही नहीं पता रशिया यूक्रेन का वार हो रहा है, रशिया की करेंसी रूबल है, यूक्रेन का प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, अगर ये सब भी नहीं पता देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू बी इन द टॉप कॉलेज, राइट? सो ये तो बेसिक पता रहना पड़ेगा. उसके लिए जस्ट से कि करंट अफेयर्स देखो, राइट? वो है. एज फॉर इंग्लिश वर्बल, उसके लिए मैं बोलूंगा व्हाट मोस्ट पीपल आर डूइंग इज दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन ग्रामर. डोंट डू दैट, क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत इनिशियली करा था, बट आई जस्ट रियलाइज कि मैंने एनटीए का प्रोस्पेक्टस देखा कि उन लोग क्या क्या चाह रहे हैं. सो आई ट्राई टू एनालाइज अ लॉट कि वो लोग किस माइंडसेट से दे रहे हैं, किस माइंडसेट से मॉक पेपर रिलीज कर रहे हैं, एवरीथिंग. आई जस्ट रियलाइज दैट दे वांट टू टेस्ट कि लोग 100 आउट ऑफ 100 ले आते हैं इंग्लिश में बोर्ड्स में, बट दे डोंट इवन नो हाउ टू स्पीक अ सिंगल सेंटेंस प्रॉपर्ली. कुछ स्मूथ फ्लो या कुछ भी नहीं है. सो दे आर ट्राइंग टू टेस्ट दैट. मैं वोकैबुलरी टेस्ट कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टेस्ट कर रहे हैं, फिर पोएटिक डिवाइसेस जो होते हैं, सिमिली, मेटाफोर, फिर ये सब चीजों को टेस्ट किया जा रहा है जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं. सो दीज आर द टॉपिक्स दैट आर बीइंग टेस्टेड. सो इसके लिए यू कुड लाइक
मॉक्स दो, वर्ड पाम इजी ले लो, जस्ट ऑनलाइन देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेट्स होते हैं उनको सॉल्व करो. सो दीज आर द थिंग्स यू कैन डू फॉर वर्बल. डोंट डू टू मच ऑफ ग्रामर, आई से फोकस ऑन मॉक टेस्ट. एज फॉर सब्जेक्ट वाइज, मैं जो भी सब्जेक्ट दिया मैं सबका शॉर्ट में बता देता हूँ. अकाउंट्स के लिए एनसीईआरटी का थ्योरी जरूर करना, वेरी इंपॉर्टेंट. फिर उसके अलावा क्या बोलते हैं उसको, डीके गोयल और टीएस गेवाल, यू कुड डू वन ऑफ देम. आई डिड बोथ. थोड़ा ज्यादा टाइम था यू कुड से, बट यू कुड जस्ट गो फॉर वन ऑफ देम, इट वर्क्स. इकोनॉमिक्स के लिए, इंडियन इकोनॉमिक के लिए गो फॉर एनसीईआरटी. संदीप गर्ग और एक और क्या नाम है उसका, सॉरी, मैक्रो एंड माइक्रो के लिए गो फॉर संदीप गर्ग. You could go for any other reference as well. I personally use Sandeep Garg. Business studies के लिए just go for NCERT. If you have a tutor, that would be good. क्योंकि business studies में case study वगैरह समझ लोगे तो that's nice. But नहीं भी तो भी ठीक है, just use NCERT. That should be the base of the material क्योंकि NCERT से questions आने वाले हैं, ठीक है. NTA will directly quote a line and you will have to like figure out कहाँ पे था, कैसे था, उसका meaning क्या है. So business studies के लिए NCERT strictly. Entrepreneurship also NCERT. और क्या नाम है इसका, मैथ्स के लिए डेफिनेटली मैं बोलूंगा एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. एंड आई फॉलो 2 यूट्यूब चैनल्स फॉर मैथ्स, एक नेहा अग्रवाल मैथमेटिकली इंक्लाइंड एंड एक सीयूटी अड्डा में शशांक सर करके. बाकी मैंने नहीं देखा अड्डा वगैरह से, यूट्यूब का उतना नहीं, बट शशांक सर इज वन गुड टीचर जो मैथ्स के लिए तो अच्छे हैं, सो यू कुड रेफर टू हिम. बाकी मैंने बता दिया, इन सब का कंटेंट ऐसे ही है.